Okay, so topic is modeling data in organization. So this is the agenda of today's lecture. First of all, we're going to see the concept of business rules, and we are going to see, secondly, then we are going to see the nitty-gritties of ER modeling. In ER modeling, there are three fundamental concepts: the concept of entity, concept of attribute, and concept of relation. So starting from the business rules, as you can see from there are 3 points providing some overview of the concept of business rule. Business rules are statements that define or constrain some aspect of business and guide the behavior of the business. तो क्या समझ आई इसमें कि business rules are some sort of statements. Those can be written in the form of textual statements, but those statements can also be depicted in the form of some graphical notations. Those we are going to discuss in subsequent slides, and those statements put some constraint or define some constraint. We will see various examples of constraints in the coming slides. So then it will be clear to you what I mean by the constraints. And obviously these constraints are placed on some behavior of the business, because we try to define a business with the help of business rules, that what actions are allowed and what actions are not allowed. So this is how we try to define some business rules. Second important point is that business rules are crucial for ensuring the integrity, consistency, and accuracy of the data stored in the database. So what happens that within a database, we implement those business rules. Within that database, we implement those business rules, and those business implementation of those business rules helps us to manage the integrity, consistency, and accuracy of our data, which has been placed or which will be placed in the database. The third point is that business rules guide the creation of entities, attributes, and relations. So, as I mentioned you earlier in the first slide, that there are three fundamental concepts in business rules. First concept is that of entity, that we are going to see in coming slides. Then the concept of attribute, and then concept of relationship. And ensuring that data model is robust, scalable, and flexible. So obviously we try that our database, the data which we have placed, it should be scalable. Scalable का क्या मतलब होता है? It can be built आप उसको ज़्यादा आसानी से डेटा को बढ़ा सकें, कम कर सकें, तो ये स्केलेबिलिटी में आता है. And flexible, so that we can make some changes enough to handle the complexities of business processes it represents. Okay, so these are some basic points. Now, there are some characteristics which we expect from a business rule. So once we are defining a business rule, it should have some characteristics. Characteristics में क्या चीज नजर आ रही है? That business rule should be declarative. Business rule should be declarative. Declarative का क्या मतलब हुआ? कि जैसे आगे लिखा हुआ है what to do, यानी एक लेवल होता है what, level of what, and other level is level of how. What should be done and how it should be done. किस लेवल पे डिटेल ज्यादा होगी, किस लेवल पे डिटेल कम होगी, ठीक है. हाउ में डिटेल ज्यादा होगी और व्हाट लेवल पे डिटेल कम होगी. तो बिजनेस रूल्स आर डिफाइंड एट व्हाट लेवल. अब बताते हैं क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए.
दैट कम्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो वो चीज बिजनेस रूल में नहीं बताते, तो हम थोड़ा एब्स्ट्रैक्टली बिजनेस लेवल पे क्या कुछ होना चाहिए, हम उस लेवल के बिजनेस रूल्स को डिफाइन करते हैं। देन बिजनेस रूल्स शुड बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब है कि ये ना हो कि उससे एम्बिगुअस बिजनेस रूल बनाए जिससे मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हों। तो इट शुड बी वेरी कंसाइज, इट शुड डिपिक्ट ओनली वन मीनिंग। थर्ड इज बिजनेस रूल शुड बी एटॉमिक। अच्छा, एटॉमिक के आगे लिखा हुआ है वन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि बिजनेस रूल्स में एंड करके आप उसको कंपाउंड स्टेटमेंट ना बनाए बिजनेस रूल में। अ बिजनेस रूल शुड हैव वन प्रिसाइज स्टेटमेंट। thirdly it should be consistent. consistent means no conflict. इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 बिजनेस रूल्स लिखे हैं, पता चले बिजनेस रूल 2 और बिजनेस रूल 8 इनमें कंफ्लिक्ट है, वहां पे एक काम कह रहे हैं, वहां पे उसको नेगेट कर रहे हैं आप बिजनेस रूल 8 में। तो जितने भी बिजनेस लिस्ट ऑफ बिजनेस रूल्स होगी उसमें कोई कंफ्लिक्टिंग आपस में बिजनेस रूल्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज दिस शुड बी एक्सप्रेसिबल। अगेन कोई मिस इंटरप्रिटेशन उससे ना हो सके, नहीं होनी चाहिए। देन इट शुड बी डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये भी हो सकता है आपने 10-12 बिजनेस रूल लिखे हैं, एक दो जगह पे आपने वो रिपीट कर दिया है, बिजनेस रूल 2 को भी वही लिख दिया, बिजनेस रूल 8 में भी वही लिख दिया। तो कोई डुप्लीकेशन आपके ऑल सारे बिजनेस रूल्स में नहीं होनी चाहिए। देन दीज शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड। बिजनेस ओरिएंटेड ये है कि उसमें कोई टेक्निकल डिटेल्स, टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, आपकी बिजनेस लेवल पे कंस्ट्रेंट्स लिखे जाने चाहिए। मैं अभी एग्जांपल भी एक दो दिखाता हूं आपको। तो जब बिजनेस लेवल पे लिखेंगे इसका मतलब है कि आवर लेवल विल बी हायर, जिसमें आप व्हाट लेवल पे बात कर रहे होंगे। व्हाट लेवल पे बात कर रहे हैं तो मतलब यू आर टॉकिंग एट अ बिजनेस लेवल। हाउ लेवल पे जब बात कर रहे हैं इसका मतलब है यू आर टॉकिंग एट इंप्लीमेंटेशन और टेक्नोलॉजिकल लेवल। तो बिजनेस रूल्स आर एट हायर लेवल। अच्छा जी, दिस इज अ सैंपल ईआर डायग्राम। ईआर स्टैंड्स फॉर, हाँ जी, किस किस को इस टर्म का पता है? ER stands for entity relationship. So it's a typical diagram which is used for designing a database. ठीक है जी, ये जो डायग्राम है it is used for designing a database. अच्छा, इसमें इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। आपने ऊप पढ़ ली हुई है। ऊप में जो क्लासेस को डिफाइन करने का जो मैकेनिज्म होता है, क्लासेस हम क्या करते हैं, रियल वर्ड एंटिटीज, रियल वर्ड कॉन्सेप्ट से एक क्लास को ड्राइव किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। आप कहते हैं स्टूडेंट इज अ क्लास, टीचर इज अ क्लास, इज वन क्लास, जब ऊप में सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो डेटाबेस में वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट के जरिए हम क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स। तो डेटाबेस में हम रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट से जो होता है उससे हम एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो क्लास को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस डेटाबेस में एक एंटिटी को डिफाइन करने का प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो रिलेशनशिप्स डिफाइन करने का प्रोसेस, एट्रीब्यूट, हर क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं। सेम इज द मैकेनिज्म जो कि डेटाबेस में एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एंटिटी के एट्रीब्यूट जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में डिफाइन नहीं कर रहा, ये समझिए कि एक तरह की क्लासेस हैं। तो क्लासेस आर बेसिकली रियल वर्ड कॉन्सेप्ट्स और रियल वर्ड एंटिटीज जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप डेटाबेस डिफाइन कर रहे हैं, तो उस रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स को हम एंटिटी में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटिटीज नजर आ रही हैं सप्लायर के नाम से। सप्लायर इज एन एंटिटी, कस्टमर इज एन एंटिटी, ऑर्डर, प्रोडक्ट, आइटम, शिपमेंट, these all are entities. Sometimes we also call these entities as entity type. एंटिटीज को हम एंटिटी टाइप भी कहते हैं, लेकिन कॉमनली एंटिटी टाइप को सिंपल एंटिटी भी कहा जाता है। तो इसलिए एक चीज ये याद ज़हन में रखना है आपने कि कहीं एंटिटी आपसे कोई टर्म यूज हो रही है, ये एंटिटी टाइप टर्म यूज हो रही है, बोथ
are synonyms, entity and entity type. अच्छा, अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो लाइनें नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली रिलेशनशिप्स, और ये सिंबल है एंटिटी टाइप का जो कि रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, और लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशनशिप. तो आपने ऊप में मोस्ट प्रॉब्ली क्लास डायग्राम्स वगैरह देखी होगी. तो विद द हेल्प ऑफ क्लास डायग्राम वी कैन आल्सो डिपिक्ट द ER entity relationships can also be depicted with the help of class diagram. But the typical notations which are used in database design, these are called ER diagrams. And इसमें जो notations आपको नजर आ रही हैं, इसको Crowfoot notations कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Crowfoot notation. तो ये जो Crowfoot notation आपको नजर आ रही हैं, these are typical once we are trying to design our databases. तो ये एक टिपिकल नोटेशन है, लेकिन आपको यू कैन ऑल्सो डिफाइन डेटाबेसेस एंड एंटिटीज विद हेल्प ऑफ क्लास डायग्राम्स. तो लेकिन ये ज्यादा एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है. नजर नहीं आ रहा? अच्छा, इसको को बड़ा करने का तरीका देख लेते हैं फिर. इज देयर एनी वे? स्लाइड व्यू लगाया था मैंने, लेकिन इसको फिर